So today we are going to start our antifungal drugs. In the yesterday's session, we have seen drug treatment of tuberculosis and drug treatment of leprosy. So today we are going to see these antifungal drugs. Any infection of fungus, fungal infection or mycosis. Infection of fungus is known as a mycosis. So infection of fungus is known as a mycosis or fungi. They are also a kind of microorganism. They are also pathogenic in nature. Most of the times they will not harm you, but if the infection is severe, then obviously you need a medical attention, you need a treatment. Okay, so infection of fungus is known as a mycosis. Remember, mycosis or a study of fungus. Study of fungus is known as a mycology. Study of fungus is known as a mycology, and infectious disease of fungus is known as a which are used to treat the fungal infection, or those drugs which are used in the treatment of fungal infection. They are known as antifungal drugs. Now different fungus are there. There is no need to go in the deep, but I would like to highlight. So fungal infection may be either three types. Superficial fungal infection, mostly on your different surfaces of your body like nails, eyes, okay, hands, skin, etc. So superficial infection. Superficial infection of fungus is again divided into three depending upon the type of organism involved. So superficial fungal infection may be from either from ringworm or Candida albicans, or from Tyriasis versicolor. Tyriasis versicolor is name of again a fungus, or then Tinea nigra. So remember, study of fungus is known as a mycology or phycology. Phycology. So study of fungus is known as a mycology or phycology, and fungus is again a pathogenic organism to you, like बैक्टीरिया वायरस. जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो आपको डिसीज करते हैं. So likewise that fungus will also cause disease. Now mostly three type of fungal infections they are encountered in the medical field. So they might be either a superficial infection to your skin and other skin and mucous membrane of various body parts. Then okay, in case of superficial infection, they might be either from ringworm infection, or they might be either of Candida albicans, might be infection of Tyriasis versicolor. Okay, it is a kind of fungus. Then it might be infection of Tinea nigra. So superficial infection of fungus or superficial fungal infection, it is caused by superficial fungal infection is caused by either ringworm, Candida albicans, Tyriasis versicolor, and Tinea nigra. These are some causative organism or causative fungus for superficial infection. Now subcutaneous infection is caused by, okay, subcutaneous fungal infection is known as this. This is a madura fruit is a kind of subcutaneous fungal infection. Then systemic fungal infection, मतलब आपके blood में infection हो सकता है. Blood में अगर होगा है, that is known as a histoplasmosis coccidomycosis. The fungal infection, it might be either superficial or it might be a subcutaneous, it might be a systemic infection. So depending on that, they are which kind of infection is there. So superficial infection mostly it is caused by ringworms, then Candida albicans. So superficial infection are caused by ringworm, Candida albicans, Tinea nigra, and Tyriasis versicolor. Then subcutaneous infection is, for example, Madura foot is a kind of subcutaneous infection, and this Candida, okay, coccidomycosis, then histoplasmosis and blastomycosis. These are the systemic infections. These are the systemic infections. Now these infections may be either superficial, cutaneous, or might be a deep mycosis. So infection of fungus is also known as mycosis. Infection of fungus is known as mycosis. So superficial infections, superficial, cutaneous और subcutaneous mycosis. मतलब superficial, cutaneous या फिर subcutaneous infection अगर हो गया तो उसको बोलेंगे superficial cutaneous subcutaneous mycosis. In that example क्या है कि superficial infection of your nail, hairs, skin. Okay, जैसे आप में जैसे लेडीज में बहुत सारा होता है, उनके बाल में क्या होता है, डैंड्रफ हो जाता है frequently. So dandruff is a kind of fungal infection. So fungal infection of hair is nothing but the dandruff. A dandruff may be a fungal infection. Then fungal infection of nail. आपने देखा होगा किसी किसी आदमी का या फिर किसी किसी लेडीज का
जो नेल्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का नेल होता है, या फिर वो बहुत ही डैमेज होता है, ग्रीन कलर का येलो ग्रीन कलर मिक्स, दैट इज अ काइंड ऑफ nail infection, nail fungal infection. So superficial hair infection like dandruff, nail infection, then nail infection, and then skin infection. So जसं स्किन वरती चट्टे येतात किंवा काही फंगल राऊंड वर्मचे इन्फेक्शन असतं. सो स्किन इन्फेक्शन. सो दे आर अ सुपरफिशियल इन्फेक्शन. Superficial superficial infection of skin, hairs, nails. Then cutaneous infection of nail, hair, and skin, and subcutaneous infection of skin. So it is known as a superficial cutaneous or subcutaneous infection of fungus. That is a mycosis. Then deep mycosis means if this fungus or fungal infection invades your internal organs. अगर आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी फंगस का इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलेंगे डीप माइकोसिस. सो इट में बी ए डीप माइकोसिस ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन तक आपके फंगस का इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर लंग्स में भी हो सकता है, हार्ट, लिवर, spleen, kidney, okay, liver, spleen, kidney. Okay, so if the fungus infection affects or fungal infection invades or it goes up to internal organ, then it is known as a deep mycosis. If it is superficial localized up to skin, hairs, then nails, cutaneously or subcutaneously, then it is known as a superficial cutaneous subcutaneous mycosis. Deep mycosis, subcutaneous mycosis. ठीक है, clear? Different kind of ये infections of fungus, okay, on various body organs. So deep mycosis means infection of fungus to your deep organs or vital organs, and superficial infection means they are either infects skin, nail, or hairs, either superficially, subcutaneously, or cutaneously. So the different kind of fungus. So it is beyond the scope of this lecture, and if you want to learn what are the different kind of fungus, their class, their subclass, their species, etc., etc., you can learn from microbiology book. Actually that is not important for your GPAT, but you should know what kind of infection they can cause. So they can cause superficial superficial infection, subcutaneous infection, and systemic infection. So systemic infection में histoplasmosis, then coccidomycosis, then blastomycosis. Subcutaneous infection में Madura food is there. Then superficial infection is caused mostly because of the ringworms, Candida albicans, Tinea nigra, and Tyresis versicolor. Okay, so you should know this. What is important for your GPAT Niper exam and other exam? So different kind of anti-fungal drugs, their classification, their mechanism of action, their adverse effect, specific indication. So these points are important for the GPAT Niper DI Pharmacist exam. But they are not going to ask you a kind of fungus or their classification. But you should know this. That's why I have taken it. Classification of antifungal. Classification of drugs used in the mycosis or drugs used in the treatment of fungal infection. That is antifungal drugs. There are different classes of antifungal drug. So depending on the type of book, हर एक book में थोड़ा सा अलग अलग classification दिया है. So it is a classification of KD Tripathi. So first class antifungal antibiotics. First class is nothing but the antifungal antibiotics. In that also you have three subclasses. Antifungal antibiotic, in that first is a polyene kind of antibiotics. So what do you mean by polyene? तो poly मतलब क्या है? बहुत सारा. इन मतलब क्या है? जैसे होता है अल्केन अनसैचुरेशन नहीं होता, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और अल्काइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. डबल बॉन्ड किसमें? अल्कीन में, ई एन ई. सो पॉलीन मतलब क्या? उसमें बहुत सारा डबल बॉन्ड रहेगा. सो पॉलीन एंटीबायोटिक मींस दोज antibiotics which consist of numerous double bonds. So in that you have amphotericin B, nystatin, and hamicin. Nystatin, hamicin, amphotericin B. They are known as antifungal antibiotics. Then again, in that also you have derivatives of the echinocandins. Derivatives of echinocandins. Echinocandins. So in that you have caspofungin, then micafungin, and anidula fungin. Capsomica anidula. Capsofungin, micafungin, anidula fungin. They are the again antifungal antibiotics. एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स में तीन क्लासेस है. पहला है आपका पॉलीन मतलब डबल बॉन्ड वाले एंटीबायोटिक्स, बहुत सारा डबल बॉन्ड रहेंगे उसमें. सो एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हैमाइसिन. इचिनोकैंडिडियंस में एक अलग क्लास है, उसमें कैप्सोफंगिन आता है, मिकाफंगिन आता है, एंड एनिडुला फंगिन. देन थर्ड क्लास में थर्ड एंटीबायोटिक एंटीफंगल एंटीबायोटिक, थर्ड इज
third class antifungal antibiotic, heterocyclic benzofuran derivative. Heterocyclic benzofuran derivative. In this you have grisivopulvin. In this you have grisivopulvin. So इसमें याद रखो क्लासेस कौन सा क्लास का कौन सा एंटीबायोटिक है. तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एम्फोटेरिसिन बी ए एंटीफंगल ड्रग बिलोंग्स टू फॉलोइंग क्लास. इसमें देगा पॉलीन एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी में देगा हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान डेरिवेटिव, ऑप्शन सी में देगा दिस इशिनोकैनेडियन, ऑप्शन डी में और एक कुछ अलग देगा. सो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे आते हैं. ओके. सो या फिर आपको पूछ सकते हैं कि फॉलोइंग एंटीफंगल एजेंट डज नॉट बिलोंग्स टू पॉलीन एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स. तो उसमें तीन ऑप्शन ये रहेंगे, चौथा ऑप्शन दूसरा कुछ रहेगा. सो लाइकवाइज दे कैन आस्क क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्लास इज नोन एज एंटी मेटाबोलाइट. सेकंड क्लास इज नोन एज एंटी मेटाबोलाइट और इसमें आता है फ्लूसाइटोसिन. सो फ्लूसाइटोसिन. नाउ थर्ड क्लास इज नथिंग बट द azole antifungals. Azole antifungals. Okay. Azole antifungals. In that also you have two subclasses. First is imidazole containing antifungals and second one is a triazole containing. Imidazole मतलब क्या है? Imidazole मतलब 2 नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग. Imidazole मतलब 1,3 नाइट्रोजन in the 5 मेंबर रिंग. So azoles मतलब क्या? Azole मतलब nitrogen containing heterocyclic ring. Azole antifungals in that you have derivatives of imidazole. So imidazole के derivative जो 1,3 नाइट्रोजन होगा उसमें. So in that also you those which are used topically and those which are used systemically. Topically कौन से यूज करते हैं? याद रखो कोट्राइमेजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, लुलिकोनाजोल. Okay, there are a lot of drugs conazoles. Okay, so ये कोट्राइमेजोल है. क्या है? कोट्राइमेजोल. कोट्राइमोक्सेजोल वो अलग है. कोट्राइमोक्सेजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिन प्लस सल्फोमिथाक्सोजोल. तो सल्फोनामाइड्स में देखा है कोट्राइमोक्सेजोल, कोट्राइमोक्सेजोल, उसमें मोक्सेजोल रहेगा. इसमें क्या है? कोट्राइमेजोल. सो कोट्राइमेजोल इज अ टॉपिकल imidazole azole antifungal drug. Okay, so topically कोट्राइमेजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ओके, लुलिकोनाजोल, ये सब आता है उसमें. सिस्टेमिक में आता है कीटोकोनाजोल. सिस्टेमिक में आता है कीटोकोनाजोल और एक आता है इट्राकोनाजोल. कीटोकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल. कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल. सो याद रखो. इमिडाजोल्स में ये ट्रायाजोल्स में क्या आता है? ट्रायाजोल्स. ट्राया मतलब क्या? ट्राया मतलब 3. तो इसमें 3 नाइट्रोजन होगा. There are 3 nitrogen in the heterocyclic ring. Okay? Triazoles 5 membered ring, 3 nitrogen. So in that gluconazole, itraconazole, preconazole and posaconazole. Itraconazole यहाँ पे systemic के लिए यूज करते हैं. It's a triazole derivative, but it is used for systemic infection. याद रखो imidazole में topically cotrimazole, fluconazole, miconazole, oxyconazole. Imidazole में याद रखो ketoconazole, oxyconazole, miconazole, iconazole, cotrimazole. ट्रायाजोल्स में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ओरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, ये सब ट्रायाजोल्स में रहेंगे. नेक्स्ट क्लास इज नथिंग बट द अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव. अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव. सो इन दैट यू हैव टर्बिनाफिन. सो टर्बिनाफिन इज अगेन अल्काइल अमाइन एंटीफंगल. क्लासेस याद रखो. एंटीबायोटिक में 3 क्लासेस होता है आपका. पॉलीन, इकोनोकैंडियन, ओके, सो इशिनोकैंडिडियंस, देन हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान. एंटीबायोटिक मेटाबोलाइट में आता है फ्लूसाइटोसिन. एजोल्स में 2 क्लासेस आता है, इमिडाजोल एंड ट्रायाजोल. तो इमिडाजोल में ये सब आता है. कोट्राइमेजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल. ट्रायाजोल्स में आता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ओरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल. अल्कालामाइन में आता है टर्बिनाफिन. तो अल्कालामाइन, टर्बिनाफिन. नाउ टॉपिकली यूज्ड एजेंट, टॉपिकल फंगल एजेंट. इसमें टोलनाफेट आता है. Then undecyclinic acid आता है. undecyclinic acid. Then benzoic acid आता है. cyclopyroxolamine आता है. butanafine आता है. quinaclor आता है. quinadoclor and sodium thiosulfate. ये टॉपिकली यूज करते हैं. सो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. आपको क्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है. तो जस्ट क्विकली रिवाइज इट अगेन. सो एंटीबायोटिक, antifungal antibiotics. In that you have polyene antibiotics like nystatin, haemycin, amphotericin B. Echinocandidin antibiotic like capsinofungin, micafungin and anidulafungin. Then heterocyclic benzofuran derivative like grisivopulvin. Then second class will be your anti-metabolite. In that you have flucytosine. Now third class will be azole antifungals. In that you have either imidazole derivatives or
ट्रायाजोल डेरिवेटिव्स। इमिडाजोल में दो, इमिडाजोल में सिस्टमिक टॉपिकली छोड़ो इसको मतलब इमिडाजोल में आता है कोट्रामाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, ओके, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टमिक में आता है केटोकोनाजोल। ट्रायाजोल्स में आता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ओरिकोनाजोल एंड पोसोकोनाजोल। आपका अल्कलामाइन जो है, अल्कलामाइन में आता है आपका टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन इज अल्कलामाइन। टॉपिकल में आता है टोलनाफेटेट, ओके, अनडिसाइक्लिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो टॉपिकल में आता है टोलनाफेट, अनडिसाइक्लिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्लोपायरोक्स, देन ब्यूटेनाफाइन, then quinidochlor and sodium thiazide. So we'll see the classification again. ये classification याद रखो, you have to remember. Again antifungal classification. Topically कौन से use करते हैं? Hamycin and nystatin. Topically used antifungals, nystatin and hamycin. Then systemically used antifungals. In that you have different classes. Antifungal antibiotic like crisopulvin, amphotericin B. Antimetabolite में आता है आपका फ्लूसाइटोसिन। एजोल डेरिवेटिव, एजोल डेरिवेटिव में आता है दो। पहला आता है इमिडाजोल डेरिवेटिव लाइक कोट्रामाजोल, इट, ओके, देन कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, लुलिकोनाजोल एक्सेट्रा। देन ट्रायाजोल्स में आता है आपका फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल। देन मिसलेनियस में आता है टर्फेन, टर्बिनाफिन। मिसलेनियस में अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक में दिया है। तो विल सी वन बाय वन ड्रग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। So first one is nystatin. So it is a polyene antibiotic. Polyene मतलब क्या है? इसमें बहुत सारा डबल बॉन्ड्स रहेगा। So it is a polyene kind of antibiotic obtained from Streptomyces nourseii. Obtained from Streptomyces nourseii. Nourseii. Streptomyces nourseii. So it is active against the various kind of fungus like Candida albicans, then Histoplasma, Blastomycosis, Trichophyton, Microsporum, Audoni, okay, Audoni. So it is active against this organism. ये सब फंगस के नाम है, आपके याद नहीं रखा तो भी चलेगा। Candida albicans, Histoplasma, Blastomycosis, Trichophyton, Microsporum, Audoni। उसका मैकेनिज्म देखो, इसका क्या मैकेनिज्म है। तो मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म क्या रहेगा एंटी फंगल ड्रग्स का। सो जो एंटी फंगल ड्रग्स एंटीमेटाबोलाइट नहीं है, बाकी जो एंटीमेटाबोलाइट नहीं है वो एंटी फंगल ड्रग क्या करेंगे, एक तो सेल वॉल जो है फंगस का उसको अफेक्ट करेंगे बाय डिफरेंट मैनर, या फिर क्या करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं कि सेल वॉल के लिए जो कंपोनेंट लगता है, जैसे जैसे आपने देखा है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में सेल वॉल का कंपोनेंट था माइकोलिक एसिड, दैट वाज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई। बट इन केस ऑफ योर फंगस केस में क्या है कि यहाँ पे भी सेल वॉल का कंपोनेंट रहता है ये। तो सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे अर्गोस्टिरॉल होता है, अर्गोस्टिरॉल। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट। देन ग्लाइकान्स होता है। सो ये सब ड्रग जो है आइदर दे एक्ट ऑन अ सेल वॉल और दे विल एक्ट एज अ एंटीमेटाबोलाइट और दे विल एक्ट एज अ रिएक्टिव रेडिकल्स। ओके, ये मैकेनिज्म तीन कॉमन मैकेनिज्म है। We'll see one by one. So nystatin is a polyene antibiotic obtained from Streptomyces nourseii, active against the Candida albicans, Histoplasma, Blastomycosis, Trichophyton, Microsporum, Audoni. Then it combines with the cell membrane of fungus and creates a pores. Question इसके ऊपर आता है, already 2-3 बार आ चुका है। Following antibiotic will create holes or pores or channels in the cell membrane of fungus. So polyene antibiotic they combine with the cell membrane of fungus and creates holes, okay, pores or channels. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है फंगस का उसके ऊपर क्या करेंगे, छेद कर देंगे, छेद, creates a poles or channels and thus increasing the membrane permeability। मतलब क्या, सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट रहता है फंगस का वो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर, मतलब फंगस मर जाएगा। तो this nystatin will combine with the cell membrane of fungus and will create a pores or will create a holes or channels in the cell membrane and will cause increase in the membrane permeability. It may be either fungistatic or fungicidal depending upon the concentration. ये fungistatic भी हो सकता है, fungicidal भी। Static मतलब growth prevent करने वाला, sidal मतलब kill करने वाला। It is used in the treatment of localized vaginal vaginal skin and gut candidiasis। मतलब ये मैक्सिमम कैंडिडिया अल्बिकन्स के अगेंस्ट में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स में
because female urethra is open and it is its size also length of female urethra is less, so that's why more prone to infection. तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा लेडीज में होता है and it is mostly Candida albicans. It causes the infection to the urethra. So it is used in the treatment of localized vaginal skin or GIT candidiasis. Candida albicans की वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसमें यूज करते हैं. Then molinenal infections of vagina. Monilial मतलब ये भी kind of fungus है. Monilial infection is also kind of fungal infection. तो इसमें याद रखो निस्टेटिन इज अ पॉलिन एंटीबायोटिक and acts by creating the holes or pores or channels on the cell membrane of fungus and increases the permeability of cell membrane and used in the treatment of candidiasis, vaginal candidiasis, skin candidiasis, then GIT candidiasis. Gut मतलब GIT. Molinenal infection of vagina. Second drug is nothing but the emersin. Emersin is obtained from Streptomyces notellanis. Streptomyces notellanis is also used to treat the bronchopulmonary aspergillosis, candidiasis. जो aspergillus फंगस है उसकी वजह से जो bronchopulmonary जिसे में अभी खांसी आता है मुझे, तो it might be it is because of the थोड़ा एलर्जी इसलिए. तो अगर bronchopulmonary aspergillosis हो गया, aspergillus फंगस का इन्फेक्शन हो गया या फिर कैंडिडिया albicans का इन्फेक्शन हो गया, so it is used to treat the bronchopulmonary aspergillosis or candidiasis. Then also used to treat the ophthalmic keratitis. Keratitis मतलब fungal infection to the keratin. तो keratin होता है उसको अगर fungal infection हो गया तो उसको बोलेंगे keratitis. So it is used in the treatment of these conditions. Pimarsin, okay. Then hamicin. Hamicin is again a kind of polyene antibiotic. It is obtained from Streptomyces pimperiana. And it is used to treat the dermatitis, blastomycosis like nystatin. Nystatin है उसके जैसे इसका यूज है. So again यहाँ पे polyene antibiotic है. Next one is the main important griseofulvin. इसमें याद रखो griseofulvin is the antibiotic obtained from fungus itself. Griseofulvin जो है isolated from Penicillium griseofulvum. Penicillium griseofulvum. It is the first compound effective in the superficial dermatophyte, or that is a ringworm infection orally. Antifungal drug ज़्यादा effective नहीं थे पहले, होते थे लेकिन उनको toxic है. So that's why this was the first which is effective orally. Griseofulvin obtained from Penicillium griseofulvum. Now it is effective against this Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, not effective against the Candida albicans. It is a fungistatic in nature, not a fungicidal. Trichophyton के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोपाइटन, डर्मोफाइट्स, रिंगवर्म के अगेंस्ट में इफेक्टिव है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इट हैज अ साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी लाइक कोल्चिसिन. साइटोटॉक्सिक मतलब ये सेल को डैमेज करता है, सेल को किल करता है. साइटोटॉक्सिक, सेल को टॉक्सिक, इट इज अ टॉक्सिक कंपाउंड टू द सेल. साइटोटॉक्सिक, ओके, इट हैज साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी लाइक कोल्चिसिन. It damages the microtubular protein and prevent the mitosis. So mitosis and meiosis जो होता है, that is a process of cell division. So process in the detail we will see before anti-cancer drug. जब anti-cancer drug discuss करेंगे उसके पहले mitosis meiosis आपको explain करूँगा, उसके बाद में anti-cancer drug लेंगे. तो यहाँ पे इतना रखो कि mitosis meiosis it is a process for cell division, और उसमें microtubule जो होता है, माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन एक स्टेप होता है. सो जैसे जो सेल का कंपोनेंट डिवाइड होता है डीएनए वगैरह हाफ क्वांटिटी, वो उसके बाद में उसका माइक्रोट्यूबुल और स्पिंडल बनता है. बाद में हर एक माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल का एक सेल बनता है. डैमेजेस माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन एंड प्रिवेंट द माइटोसिस. सो इट आल्सो हैज अ वीक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी. तो अभी ये 2-3 एंटीबायोटिक को आ गए हैं. There are 3 antibiotics having anti-inflammatory activity. Now tell me the names. Last lecture में भी मैंने ये बोला था, बोलो names क्या है. There are 3 antibiotics which has a anti-inflammatory activity. This griseofulvin has one, macrolide antibiotic is the second, and third one is a griseofulvin
is very important antifungal drug. Again, they used to ask question on this. It is obtained from Penicillium griseopulvum. And is important. It is obtained from Penicillium griseopulvum. It is effective against the dermatophytes. That is, dermatophytes means ringworm. Again, effective against the Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton. Not effective against the Candida albicans. It is mostly fungistatic in nature. Mechanism of action. So it is a cytotoxic antifungal drug like colchicine. Colchicine is also cytotoxic anti-cancer drug. It damages the microtubular protein and prevent the mitosis. It has a weak anti-inflammatory activity. It mainly acts on a fungal, mainly act on a growing fungal cells. It inhibits the hypal cell wall synthesis. जो फंगस होता है उसको हाइपर बोलते हैं. So inhibit the hypal cell wall synthesis. Has a greater affinity for diseased skin than normal skin. It also acts as a purine analog and interfere with the nucleic acid synthesis. The drug deposited in the keratin precursor and gets firmly incorporated into keratin and makes resistant to fungal infection. It is used in the nail infection, nail and keratin infection. तो ये क्या करेगा, माइक्रोट्यूबुल जो होता है माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगा, माइटोसिस को प्रिवेंट करेगा, उसके बाद हाइपल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेगा and also act as a purine analog. Absorption, distribution, metabolism elements. Oral absorption depends on the particle size. जितना particle size कम करेंगे, decreasing the particle size will decrease the absorption of received pollution. ये आपको प्री फॉर्मुलेशन में हो चुका है. Fatty acid, presence of fatty acid or presence of lipid food in the stomach will increase the absorption. Largely removed or it is largely eliminated in the feces. Now, adverse drug reaction has a photosensitivity reaction. Peripheral neuritis. Peripheral neuritis means peripheral nephropathy. Sorry, neuropathy. Then vertigo, psychomotor incoordination. Then paresthesia. Paresthesia means numbness in the legs. It is also hepatotoxicity. It also has a hepatotoxicity. Super infection with the Candida albicans. Because ये Candida albicans में effective नहीं है. Photosensitivity of peripheral neuritis, vertigo, psychomotor incoordination, paresthesia, hepatotoxicity, super infection. So these are the thing, but the adverse reaction of your received pollen के adverse reaction याद रखो, mechanism याद रखो. Uses क्या है उसके? टीनिया कैपिटिस मतलब क्या? रिंग वर्म इन्फेक्शन ऑफ स्काल्प. कि आपका जो फोरहेड होता है के ऊपर टीनिया कैपिटिस नाम का फंगस का इन्फेक्शन होता है. टीनिया कैपिटिस रिंग वर्म इन्फेक्शन ऑफ स्काल्प. देन टीनिया बार्बे मतलब क्या? बियर्ड होता है, बियर्ड जो मेल्स में होता है, दाढ़ी के ऊपर फंगस का इन्फेक्शन लग जाता है. सो टीनिया बार्बी, सो दैट इज आल्सो treated by using this ricin. Then tinea curis, tinea pedis, tinea manus. Treatment of onychomycosis, infection of nails. Onychomycosis. Remember, it is used in treatment of different kind of ringworm infection and fungal infection of nail. Next one is the amphotericin B. Again, it is a polyene antibiotic. Polyene है क्या है? Polyene antibiotic मतलब double bond triangle. Polyene antifungal agent obtained from Streptomyces nodosus. Source याद रखो, obtained from Streptomyces nodosus. Mechanism of action is similar to nystatin. Nystatin की जैसे mechanism है. मतलब ये भी क्या करेगा? सेल वॉल के ऊपर कंबाइन होके वहाँ पे पोर्स करेगा या फिर वहाँ पे चैनल करेगा, वहाँ पे छेद करेगा. So it makes the pores in the cell wall of fungus and also causes the oxidative damage to the fungal cell wall. It has a wide antifungal activity. काफी recently काफी चर्चा में था. Adverse drug reaction क्या है इसके? It is a highly toxic antifungal antibiotic. Highly toxic antibacterial drug. ठीक है? Highly toxic होता है. It has a nephrotoxicity. Irreversible kidney damage करता है. एक बार डैमेज किया तो बाद में उसको रिवर्स नहीं कर सकते. It is a very toxic antibiotic, irreversible nephrotoxicity, hypokalemia, gastroenteritis with the blood. मतलब GIT में इन्फेक्शन करेगा आपको और उसके साथ में ब्लड भी आ सकता है. Then anemia, liver failure. These are the common adverse effects. In addition to that, it causes generalized malaise,
chills, flushing, headache, anaphylactic reaction, peripheral neuritis, peripheral neuropathy, convulsion, myalgia मतलब muscle pain, vertigo, thrombocytopenia, vertigo मतलब चक्कर आना, thrombocytopenia मतलब abnormal increase in thrombocytes, hepatic failure. So it has a variety of adverse effect because it is very toxic antifungal drug. रिसेंटली कोरोना वायरस के जो कोरोना पैंडेमिक था, ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक, सो lot of doctors which was treating the corona patients, they were using steroids, and steroids are nothing but they will depress your immunity. तो स्टेरॉइड का यूज करने की वजह से क्या हुआ, पेशेंट का डिप्रेशन हो गया, इम्यूनिटी का डिप्रेशन होने की वजह से उसके बाद में उनको फंगस का इन्फेक्शन कैच हो गया, सुपर इन्फेक्शन ऑफ म्यूकर माइकोसिस post corona meant. So some people get super infection of mycosis, that is known as a mucormycosis. So mucormycosis, kala fungus, black fungus. So it was there in the news. So that fungus was used, was this drug amphotericin B was used to treat that fungus. ये बहुत महंगा ड्रग होता है एंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है. ओके, so you can decrease the toxicity of this amphotericin B. It is a systemic, it is also used for systemic infection. So you can decrease toxicity of this amphotericin B by providing this amphotericin B in the liposomal formulation. ठीक है, liposomal formulation will decrease the toxicity, or you can decrease the toxicity of this amphotericin B by combining this amphotericin B with other systemic antifungal drug. तो याद रखो इसको, ये चर्चा में था काफी. amphotericin B again it causes the pores or it causes the channels in the cell wall of your fungus, often from streptomyces nodosus. So highly toxic antifungal agent causes the nephrotoxicity, का किडनी को डैमेज करेगा. गैस्ट्रोएंटराइटिस with blood anemia, liver failure, ये adverse reaction है उसकी. Along with that, malaria, chills, flushing, headache, anaphylactic reactions, peripheral neuropathy, vertigo, convulsions, thrombocytopenia, liver failure, myalgia मतलब muscle pain. That's the adverse reaction. To decrease that, you can give this amphotericin B in the liposomal formulation. And remember, liposomal amphotericin B. Liposomal amphotericin B was a drug of choice in the mucormycosis. अभी जो mucormycosis हुआ है आपका recently कोरोना के बाद में, so liposomal and amphotericin B was the drug of choice in the mucormycosis. पता नहीं है एक्चुअली उस टाइम पे उसका शॉर्टेज हो गया, बिकॉज दिस इज एंटीबायोटिक. नॉर्मली एम्फोटेरिसिन बी का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, एक या दो कंपनीज होती है जो एम्फोटेरिसिन बी का प्रोडक्शन कराती है, मतलब फॉर्मुलेशन कराती है. सो ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड जैसे वो सुपर इन्फेक्शन आया म्यूकोरमाइकोसिस, सो एट दैट टाइम देयर वाज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट. सडनली डिमांड इंक्रीज हो गया था, है ना, तभी ये एम्फोटेरिसिन बी मिल नहीं रहा. एम्फोटेरिसिन बी, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी उस टाइम पे मिल नहीं रहा था, तो लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्च करके उसको लिया. तो वैसा ही एक एंटीवायरल ड्रग था रेमडेसिविर, उसके साथ भी वैसे हुआ था. ड्यू टू सडन डिमांड देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ दिस एम्फोटेरिसिन बी, और जिसको म्यूकोरमाइकोसिस होगा ना उसको कम से कम 10 या 12 इंजेक्शन लगते हैं, 10-12 इंजेक्शन लगने ही लगना है, और ये इंजेक्शन का एमआरपी भी बहुत ज़्यादा है. तो इट इज यूज्ड टॉपिकली फॉर द कैंडिडिया लेशंस, मतलब कैंडिडिया अल्बिकन्स का इन्फेक्शन होने के बाद में जो जख्म बसता है उसको बोलते हैं कैंडिडिया लेशंस. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सिस्टमिक थेरेपी इन द हॉस्पिटल्स. ओके, द सिस्टमिक थेरेपी इज डन ओनली इन द हॉस्पिटल बिकॉज it is very toxic drug, so it is given under the medical supervision. So it is a treatment of choice for North American blastomycosis, South American blastomycosis, histoplasmosis, candida, spirotrichosis, mucormycosis in the diabetes, and aspergillosis. So you can see it is having wide spectrum of antifungal activity. Mucormycosis में drug of choice है, South American blastomycosis में drug of choice है histomycosis, candidiasis, sporotrichosis, mucormycosis in the diabetes, and aspergillosis. Drug of choice. Now next is a flucytosine. Flucytosine is a prodrug. It is a prodrug and it is a fluorinated pyrimidine derivative. It is a prodrug. It is a fluorinated pyrimidine derivative. It is a anti-metabolite. ये क्या है? Anti-metabolite. It is not a antibiotic. ये flucytosine क्या है? Anti-metabolite. मतलब क्या है?
ये फ्लोरिनेटेड pyrimidine है. pyrimidine किसको लगता है? डीएनए सिंथेसिस में लगता है. ठीक है. नाउ इसमें फ्लोरिनेटेड pyrimidine होने की वजह से रॉन्ग pyrimidine उसमें जाके बैठता है डीएनए में and the DNA is useless. So it is an anti-metabolite. It is a product. It is useful in the systemic infection of yeast. Yeast मतलब is converted into active metabolite. Active metabolite is nothing but the 5-fluorouracil. साइटोसिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है? 5-fluorouracil. याद रखो. And 5-fluorouracil is an anti-cancer drug. Anti-metabolite, anti-cancer drug. It inhibits the DNA synthesis. Okay. ये fluorocytosine is a product. It is a product fluorinated pyrimidine derivative. Okay. Remember, and it is converted into active metabolite known as a 5-fluorouracil, which inhibits the DNA synthesis. Now, adverse drug reaction क्या है इसके? देखो. Liver damage, neutropenia, thrombocytopenia, colitis. Drug used in the cryptococcal meningitis. It is a drug used in the cryptococcal meningitis. Used for the systemic candidiasis, including urinary tract infection. Now next one is azole antifungals. Azole मतलब इसमें नाइट्रोजन रहेगा heterocyclic ring में, particularly 5-membered heterocyclic ring containing nitrogen known as azoles. So in that you have two kind of structures, imidazole and triazole. Imidazole and triazole. Okay. So ये azoles जो है ये बहुत सारे ड्रग्स है. So azoles they are having variety of uses. So for example, antibacterial and antiprotozoal azoles. So like this metronidazole and tinidazole. So these are known as antiprotozoal azoles. Okay. तो azoles जो है उनका एक फैमिली है और उसका यूज अलग अलग है. जैसे एंटीबैक्टीरियल. ओके. एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीप्रोटोजोल उसमें आता है आपका मेट्रोनिडाजोल, tinidazole. ओके. एंथालमेंटिक होता है उसमें आता है अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल. देन एजोल दे आल्सो एक्ट एज एंटीफंगल. मतलब ये जो एजोल्स है उनको डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी है. तो एजोल्स आर एंटीबैक्टीरियल, एजोल्स आर एंटीफंगल, एजोल्स आर एंथालमेंटिक. एंटीबैक्टीरियल कौन है? एंटीप्रोटोजोल कौन है? So antiprotozoal is metronidazole and tinidazole. Metronidazole and tinidazole. Okay. Then anthelmintics कौन है? Anthelmintic मतलब those which will remove the worms from your intestine. हाँ. तो बचपन में क्या होता है कि आपके पेट में इन्फेक्शन पेट में हो जाता है. So in that case albendazole is there, mebendazole is there. Antifungal azoles, for example like in that you have imidazole derivative. उसमें इमिडाजोल डेरिवेटिव है लाइक कोट्रामाजोल, माइकोनाजोल, केटोकोनाजोल, इसोकोनाजोल, इकोनाजोल एंड सुकोनाजोल. देन ट्रायाजोल डेरिवेटिव है उसमें आता है टर्कोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल. एंटीबैक्टीरियल भी है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल. एंथालमेंटिक भी है जैसे अल्बेंडाजोल, मेबेडाजोल. एंड एंटीफंगल भी है जैसे ये. These azoles they are very toxic drug again. They are having toxicity. So we will take adverse effect of their past. So all azole derivative they are potentially embryotoxic and teratogenic. मतलब क्या ये आपके एम्ब्रियो जो है मतलब ये जो बच्चा है किसी के पेट में अगर बच्चा है तो उसको टॉक्सिटी करेगा. So all the azoles are potentially embryotoxic and teratogenic and should be avoided during the pregnancy and lactation. They are also a potent inhibitor of microsomal hepatic microsomal enzymes. जो एंजाइम्स होते हैं लीवर में मेटाबॉलिज्म करने वाले तो उनको भी ये इनहिबिट करता है. इट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP34. सो जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं. एंटी फंगल एक्टिविटी क्या है इनका? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरॉल इन द फंगल सेल. एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरॉल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन. जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसका अर्गोस्टेरॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अर्गोस्टेरॉल that is inhibited by these azoles. So they act by inhibiting the synthesis of ergosterol in the fungal cell. They interfere with the fungal. One enzyme is there known as a cytochrome P450 enzyme. Fungal cytochrome P450 enzyme. That is nothing but the 14 alpha sterol demethylase. 14 alpha sterol demethylase ये enzyme है. So उसको cytochrome P450 enzyme of fungus बोलते हैं. So that is also inhibited by this, so thereby disrupting the cell membrane. तो ये फंगस का सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब करता है, ब्रेक करता है. And also causes the accumulation of hydrogen peroxide.
also causes the accumulation of hydrogen peroxide in the fungal cell, causes the damage to the fungal cell. तो ये क्या करेंगे, अर्बोस्टिरॉल का सिंथेसिस नहीं होने देंगे, साइटोक्रोम P450 एंजाइम दैट इज 14 अल्फा स्टिरॉल डीमिथाइलेज उसको इमिट करते हैं and causes the disruption of cell membrane and also increases the intracellular hydrogen peroxide level which also damages the cell. They are a broad spectrum antifungal agent, antibacterial agent effective against the variety of dermatophytes, microsporum, cryptococcus blastomycosis, nocardia species and candida species. एक पॉइंट रह गया फ्लू साइटोसिन में, जो फ्लू साइटोसिन है सो दैट इज अ टॉक्सिक, सिलेक्टिवली टॉक्सिक टू द फंगल सेल। वो लेने के बाद में आपको ह्यूमन सेल को डैमेज नहीं करता है बिकॉज ह्यूमन सेल में वो एंजाइम नहीं होता दैट कैन एक्टिवेट द फ्लूसाइटोसिन दैट्स इट। तो यहाँ पे एजोल का मैकेनिज्म याद रखो, एजोल एंटीफंगल्स का inhibit the synthesis of ergosterol, they binds with this cytochrome P450 enzyme that is a 14 alpha sterol demethylase. It causes the disruption of cell membrane of fungus and also causes the accumulation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide का लेवल भी बढ़ा देंगे which also damages the fungal cell wall. Broad spectrum antifungal agent है, affecting the variety of dermatophytes, microsporum, cryptococcus, blastomyces and nocardia and candida species उसके ऊपर एक्टिविटी। now next is cotramazole indizole drug, cotramazole, correct, cotramazole. So it is not used systemically, it is only used topically because it is again toxic drug. Topical 1% solution is used for variety of topical fungal infection and also vaginal tablets of this cotramazole is also available for treatment of vaginal fungal infection. Then next one is a miconazole. So miconazole is an imidazole derivative, broad spectrum antifungal agent, and it is metabolized in the liver. Okay, it is used for the systemic fungal infection and topical fungal infection. Mostly ये topically के लिए ही यूज करते हैं, systemically यूज करते हैं बुक्स में से। नेक्स्ट वन इज अ कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल ओके, आपको अगर डैंड्रफ का अगर कोई इशू है, इफ योर डैंड्रफ इज नॉट गोइंग देन यू कैन यूज कीटोकोनाजोल शैम्पू। कीटोकोनाजोल का एक शैम्पू आता है, कीटो सोप आता है, कीटोकोनाजोल का शैम्पू आता है जो पेट्स को नहलाने में जो सोप यूज करते हैं, ठीक है। पेट्स मतलब अगर आपके घर में कोई कुत्ता है तो उसको नहलाने के लिए जो सोप आप लाते हो वो बहुत महंगा सोप होता है। आप जो सोप यूज करते हो उससे डबल महंगा होता है, मतलब कुत्ते के लिए बहुत महंगा सोप लाना पड़ता है, आप भी नहीं नहाते उतने महंगे सोप से। कीटोकोनाजोल का सोप लाना पड़ता है। कीटोकोनाजोल सोप इज अ मोर कॉस्टलियर देन नॉर्मल सोप। कीटोकोनाजोल so it is a water soluble imidazole derivative similar to miconazole. Ketoconazole inhibit the biosynthetic steps in the synthesis of hormones and gonadal steroids. ये क्या करता है कि ये ह्यूमंस में क्या करता है, ह्यूमंस में उसमें स्टेरॉइड्स जो है उसका सिंथेसिस इनहिबिट करता है, उसकी वजह से उसको एडवर्स इफेक्ट है। सो एडवर्स इफेक्ट कितने हैं, एलर्जिक रिएक्शन, गायनेकोमास्टिया, एक्यूट हेपेटिक न्यूरोसिस। इज आल्सो यूज्ड एज अ टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट एंड यूज्ड इन द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में आपका जो स्टेरॉइडल लेवल है वो बढ़ जाता है तो इनहिबिट होता है। देन इट इज आल्सो यूज्ड इन द फैमिलियल टेस्टोटॉक्सिकोसिस, फैमिलियल टेस्टोटॉक्सिकोसिस। गोनाडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ लीडिंग सेल, मतलब जो आपके लाइडिंग सेल्स होते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, मतलब जैसे होता है ना कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन मेल्स में, तो वो जब रिलीज होगा पिट्यूटरी से तो वहां पे जाके बाद में लाइडिंग सेल इन द टेस्टिस विल बी एक्टिवेटेड टू सिंथेसाइज द टेस्टोस्टेरोन। बट इसमें फैमिलियल टेस्टोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि वो विदाउट गोनाडोट्रोपिन एक्टिवेट हो जाता है लाइडिंग सेल्स, तो इसमें ये यूज करते हैं कीटोकोनाजोल। इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोस्टेटिक कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, तो ये सारे यूज है कीटोकोनाजोल के। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ऐसा नहीं किसी चीज के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी यूज करते हैं ना। तो जैसे आपको मैंने बोला है कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ प्रॉब्लम, सो कीटो सोप इज आल्सो अवेलेबल and ketoconazole shampoo is also available. Now next one is itraconazole. It is a broad spectrum antifungal drug, so related to ketoconazole. All the azoles जो ketoconazole से ये सब antifungal, so they are the potent microsomal enzyme inhibitors. ये microsomal enzyme inhibitors है याद रखो, mostly metabolized in the liver to its hydroxy metabolite. Okay.
एक हाइड्रोक्सी कीटोकोनाजोल हाइड्रोक्सी इट्राकोनाजोल मेटाबोलाइट होता है उसका एक्टिव इट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP EA4 फ्लोकोनाजोल इट इज अ ट्रायाजोल डेरिवेटिव इफेक्टिव ओरली ये ओरली ही यूज करते हैं फ्लोकोनाजोल का एक टैबलेट है 150 मिलीग्राम का ये उसको एक ही लेना पड़ता है इज इफेक्टिव ओरली as well as intravenously used in the meningitis caused by cryptococcal and candidiasis miscellaneous में आता है आपका टर्बिनाफिन so terbinafine is a fungicidal okay it is a fungicidal and acts by inhibiting the enzyme squalene epoxidase तो ये mechanism उसके ऊपर क्वेश्चन आता है squalene epoxidase inhibitor terbinafine is a squalene epoxidase inhibitor it blocks the synthesis of ergosterol which is very important component for cell wall of fungus thereby cell wall biosynthesis inhibited it is active it is effective orally as well as topically next one is a capsopungin it's a new antifungal agent belonging to this echinocandins category capsopungin and micapungin and तीन ड्रग है उसमें कैप्सोफंगिन मिकाफंगिन एंड एनाडुलाफंगिन कैप्सोफंगिन मिकाफंगिन एंड एनाडुलाफंगिन all these are the echinocandins okay so they block the okay, it act on a fungal cell wall and blocks the synthesis of beta 1,3 glucan अगेन ये क्या है सिंथेसिस इसका इनहिबिट किया क्रॉस लिंकिंग जो है वो प्रिवेंट करता है इसका cell wall में. So likewise penicillins. Hypercalcemia, this rash, fever, phlebitis, embryotoxicity is the adverse effect. You can see over here. So ये cell wall है आपका. ये फंगस जैसे फंगस का स्ट्रक्चर है ये क्या है फंगस का स्ट्रक्चर. This is the structure of fungus. Structure of fungus है ये. तो different antifungal drugs their targets. Okay, targets क्या है ये? So this echinocandins like capsinofungin, anadulafungin and micafungin. So what they will do? They will inhibit the enzyme that synthesizes the glucan, beta glucan, called as the penicillin of antifungals. Glucan beta 1,3 glucan जो है वो synthesis नहीं होने देंगी कौन echinocandins and that's why they are sometimes known as penicillins of antifungals. Antifungals में antifungals के penicillin किसको बोलते हैं? Echinocandins. They inhibit the synthesis of this beta 1,3 glucan by inhibiting the enzyme required for it. So cell wall के लिए important है. Polyene antibiotic क्या करेंगे? Such as amphotericin B, nystatin. Okay, binds to ergosterol, causes the pore formation, pore or leakage, cause the pore formation, leakage of potassium and sodium from fungal cell. So leads to fungal death. And also because of that also it is toxic to the mammalian cells polyene like nystatin amycin amphotericin B ये सब क्या करेंगे ये सेल मेम्ब्रेन में क्या करेंगे पोर्स करेंगे हिट करेंगे azole like fluconazole ketoconazole itraconazole they will inhibit the enzyme which synthesizes the ergosterol so they will prevent the synthesis of ergosterol is very important component of cell wall देखो ये cell wall है cell wall सिंथेसिस इनहिबिट करता है सिंथेसिस इनहिबिट करने वाले एजोल्स सेल वॉल में पोर्स करने वाले कौन है पॉलीन एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन्स ऑफ एंटीफंगल्स किसको बोला जाता है इकोनोकैंडिडियंस ओके नाउ फ्लूसाइटोसिन जो है वो एंटी मेटाबोलाइट है इट इज कन्वर्टेड टू 5-hydroxy sorry it is converted to 5-fluorouracil and that inhibit the DNA synthesis act as a pyrimidine analog side effects are myelosuppression ये बोन अप्लाई अपना मसल जो है उसको सप्रेस करेगा ये डीएनए सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है 5-flucytosine सो दिस इज जस्ट अगेन ए रिव्यू ऑफ योर एंटीफंगल ड्रग्स एक बार और देख लीजिए ग्लिसियोफुल्विन क्या करता है ग्लिसियोफुल्विन सो इट विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ फंगल हाइपल सेल एंड आल्सो कॉजेस द माइक्रोट्यूबुल इनहिबिट द माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लिसियोफुल्विन फ्लूसाइटोसिन क्या करेगा दे विल इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस एज अ एंटीमेटाबोलाइट ठीक है एजोल्स क्या करेंगे एजोल्स एंटीफंगल एजोल्स will prevent the conversion of ergosterol into lanosterol okay will prevent the conversion of lanosterol to ergosterol in terfenadine terbinafine and nephritine ये क्या करेंगे
they are known as a squalene epoxidase inhibitor. ये जो squalene है, squalene से बनता है फंगल सेल में, लाइनोस्टेरॉल से बनता है ergosterol, और वो बाद में सेल वॉल बनता है उनका. ये terbinafine, they are known as a squalene epoxidase inhibitor. Azoles क्या करेंगे? They will block the conversion of लाइनोस्टेरॉल to ergosterol. मतलब they will prevent the formation of ergosterol. ये Echinocandidin क्या करेंगे? They will prevent the form. They will inhibit the formation of this alpha beta 1,3 beta glucan. ये सेल वॉल के लिए इम्पोर्टेंट होंगे. So that's how again antifungal drugs. So this was regarding today's session.